Now we come to equity risk premium. If you look at the CAPM formula, it is RF plus beta into RM minus RF. So RM minus RF is nothing but equity market risk premium. It's also called market risk premium. That means how much return you got from the market minus how much you got it from risk-free asset. The difference is called the market risk premium. Is that okay? We know that. And if you have to just calculate, first of all, before even going and doing any calculation, let me just go into the Excel sheet, okay, which I think I did it last time. कि हम देखते हैं कि जो सेंसेक्स था, we did this exercise last time, ना? Sensex was 100, okay, and now it is 60. Now it is 70,000, okay. Now it is 70,000. This was, in the year, 1979. 1979, and we are today 2023. Okay, so how many years have gone by? 44 years. Okay, 44 years may your 100 rupees has become 70,000 rupees, isn't it? So we want to calculate what is the return. So we can just go to the formulas and go to a formula called rate. Okay, and we look at this 44 years here, and present value we say minus 100. That means you're putting 100 rupees and you're getting 70,000 rupees at the end of 44 years. So here also we can put this figure, 70,000, okay, and calculate the return. So the market has given you 16%, okay, whereas the risk-free rate is close to about 7%, okay. So what is the market risk premium you are getting? 9%. अगर हम वैसे मोटे मोटे तौर से निकाल लें तो ये 9% आती है, तो हम इसको, तो it comes to 9.05, okay. But this keeps changing. It can't be static, okay. And it's not that simple what we have just done it, okay. Let's understand a little bit. I mean, that was a thumb rule, okay. Fine. So let's go and see, what the experts say, how it is calculated. So this is the RM minus RF is the equity risk premium, okay. Read. Market risk premium represents the returns investors expect over and above the risk-free rate to compensate them for taking extra risk by investing in the stock market. Is that okay? Because you took an extra risk and you are getting 10% more, okay, or 9% more. Fine. Because the market returns are close to about 16%, okay, and you're getting 7% you would have got by investing into, a bond, but you're getting about 9% more, okay. But if you look at, the returns in the last 20 years, the returns are close to about 13-14%. But over the last 44 years, on an average, the returns are coming 16. But actually, if you look at the return, they're about 14% or 13%. So then the risk premium will be close to about 8%, okay. So let's talk about that. In other words, just read. In other words, it is the difference between the risk-free rate and the market return. Okay. It is highly contentious figure. Many commentators argue that it has gone up due to the notion that holding shares has become riskier. Okay. So there is some, there's a link here. So I'll advise everybody to go to this link. So this is again by our, good friend, Mr. Damodran, who is the biggest, he's a god of, valuation. And he's a professor, Indian origin guy, Indian person who is teaching in, New York. And he is the person who is considered Ashwath Damodran. So it is his site. So let's open this site and see what he says, what is the market risk premium. Okay. So here, what he's saying, just नीचे जाओ इसके बाद. Okay. Just look at these numbers. Okay. So first is, please यार, आपका सीट चेंज करनी पड़ेगी मुझे. या आपका तो मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन ले ही लूंगा. नेक्स्ट टाइम बोलते हो पाएगा तो. Focus here. So country. Okay. Rating. Moody's rating. Like Standard Poor, there's a Moody who rates, a country. So you'll find the India's rating also. Default spread, country risk premium, I'll talk about that later. Equity risk premium, which we are looking at, okay, and the corporate tax rate.
okay, in India and all other countries. So go to India and find out what is the market risk premium. How much is the 8.33? So we are getting almost, like I said, it's around 14%, which is the return which we are getting over the last 20 years. So if we take that 14 minus 7, so we get about 7 or 8. So he says it's 8.33% is the market risk premium. He has calculated, okay, based on certain parameters, certain assessment what he has done. Okay, we are not going into that. We're not challenging that, but this is quite a scientific way of calculating what he does. So he says that market risk premium of India. What is the India's rating? BAA3. Okay, so now what I have done is I have put everything in an Excel sheet here. Okay, one is MRP, market risk premium here. So I have not, I've just, what I did was I went to the site directly and downloaded all the data into an Excel sheet. अब मैंने बाकी जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए थे हटा दिए. ओके, अब लेकिन ये डेटा जो है ये 22 का है. बाय द वे आई कुड आई थॉट आई जस्ट अपलोड द 23, बट आई देन आई लॉस्ट टाइम. सो एनीवे द नंबर्स स्लाइटली हैव चेंज्ड. ओके, फाइन. जब किसी चीज को डाउनलोड करते हैं हम इसको ना ऐसे करके इसको शेड कर देते हैं सबको, जो डेटा है, और फिर कंट्रोल और टी दबाते हैं तो ये टेबल बन जाता. अभी टेबल बनी हुई है तो दोबारा बनेगी नहीं, तो टेबल बन जाती है. कंट्रोल टी बनाने से टेबल बन जाता है. ओके, ये आपको बताऊंगा बाद में. ओके, सबसे टॉप पे चले जाओ. आप इसको क्या है, डेटा को सॉर्ट कर सकते हो आप. देखो इसमें मैंने क्या करा हुआ है, मैंने सबसे पहले सबसे रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर लिया है. आपके पास जो आई है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है, ट्रिपल ए रेटिंग. आर यू लुकिंग एट द डेटा? ट्रिपल ए फॉलोड बाय कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी. अब जो दामोदरन भाई साहब ने भेजी थी वो तो डिफरेंट से सॉर्टेड थी. मैंने उसको रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर लिया. द कंट्री विच इज हैविंग द हाईएस्ट रेटिंग. ओके, नाउ लुक एट द रिस्क प्रीमियम. इट इज 6%. द कंपनीज विच आर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां रिस्क प्रीमियम कम है, इंडिया में ज्यादा है. वाई? ऐसा कोई बता सकता क्यों है? वाई इंडिया रिस्क प्रीमियम इज क्लोज टू अबाउट 8.33%. अब इसमें देखोगे तो 9% है. इंडिया जो है, हाउ मच इज इंडिया? लुक एट इंडिया हेयर. इंडिया इज BA22 है ना, BA3 है. ओके, सो व्हाट इज, वेयर इज इंडिया? लार्जेस्ट टू अगर कर लें तो इंडिया कितना आ रहा है? इंडिया आ रहा, इंडिया इज 9.08. ओके, BA3 है इंडिया की रेटिंग, BAA3. ओके, एंड इंडिया मार्केट रिस्क प्रीमियम हाउ मच? इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज 9.08. अब की जो लेटेस्ट आ गया वो 8.33 है, बिकॉज इट चेंज एवरी ईयर. ओके, so if you look at this thing, the countries which are highly rated, like triple A rated, AA2, matlab capital letter A or those small letter, because every Moody has this style of rating. हर एक symbol जो change हो जाता है. Standard Poor's highest rating is triple A. When you look at the Moody, the highest rating is capital A followed by 2 small A's. तो जैसे मैं यहाँ देखूं, इसको मैं वापस रेट करता हूँ, इसको चेंज कर दो वापस से वही फॉर्मेट से, A to Z. So you will have the top, the person is, the highest rating is this, A1 आ गई है, यहाँ कुछ आ गई है ना. ओके, सो द हाईएस्ट रेटिंग इज दिस एक्चुअली. ये यहाँ आ रही है ट्रिपल ए, ये कनाडा इज ट्रिपल ए. ओके, सो आई कैन डू इट फ्रॉम इक्विटी रिस्क. मैं इसको इक्विटी रिस्क प्रीमियम से कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके, मैंने इक्विटी रिस्क प्रीमियम से सॉर्ट कर लिया. ओके, ऐसे कर लो आप. हाँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो अगर आप देखोगे जिसकी ट्रिपल ए रेटिंग है उसका रिस्क प्रीमियम भी कम है, और जिसका रिस्क प्रीमियम सबसे ज्यादा है उसकी रेटिंग भी गंदी है, सबसे खराब है, और रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा है. ऐसा क्यों है? पाकिस्तान देखोगे तो बहुत रेटिंग बड़ी खराब है और रिस्क प्रीमियम भी 15, 16, 18% आ रहा है. हाँ, वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है. ओके, देखो क्या होता है कि, हाँ, अब मुझे बताओ एक बहुत बड़ी एक छोटी सी कंपनी है जिसकी 100 करोड़ टर्नओवर है.
जिसने अभी बिजनेस शुरू करा है उसने 1 करोड़ करी, अगले महीने अगले साल तो वो 2 करोड़ कर लेगा। तो कितना परसेंटेज चेंज हो गया? 100%। 1 करोड़ से 2 करोड़ बिजनेस लाने में उसको कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सपोज बिजनेस इज गुड, बट एक कंपनी जिसकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, वो कोई 10,000 से 20,000 करोड़ करने में तो टाइम लगेगा उसको ना। लिहाजा 5% बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी उसकी। तो अमेरिका ग्रोथ इज अराउंड क्लोज टू अबाउट 2%। इंडिया इज ग्रोइंग एट 7 to 8%। ओके, बिकॉज द स्मॉल कंपनीज हैं, दे ग्रो मच फास्टर। Countries which are still growing, they will have a faster percentage growth rate. The companies which are saturated, which are well developed, their stock markets also don't go up like that. Okay, fine. And their growth rate is also not going up by 6 to 7%. They will grow at 2 or 3% at the maximum. अगर 3% कर लेंगे, they are going at very good growth rate. Like America, if they say that they are going to grow at 3% or 3.5%, so that will be a phenomenal growth. But India, its growth grows at 4%. We say it's a very poor growth rate. When it goes to 7%, we say that now it is good. So, a smaller companies or smaller countries or the companies which are not developed, their stock markets will also do well. Okay, the markets will grow at a much faster pace. Everything will grow at a much faster pace in terms of percentage. Okay, fine. Like their per capita income of America and India, India's per capita is growing at a much faster rate compared to the America in terms of percentage because of the nature, because of that. Okay, so there the market risk premium is only 6%. That's why they come to India and invest. They know that India is growing much faster. Fine. India is going to offer them 15 to 16% kind of a growth. In America, they may get to about 7 to 8% growth in their own country in the stock market. Okay, so risk premiums will be much lower in a developed market, and in the in the developing market they'll be much higher. So that's the logic. Have you got it? Of course, that is something to do with the economy. Okay. तो इसमें इंडिया की जो रिस्क प्रीमियम है, वी आर टेकिंग 8.33. So we are, for this year, we are assuming, we are not going to challenge the calculation, but I can show you how it is calculated also. But let's keep it some other day. Okay. So let's go back to the slides again. Okay. Examples of a CAPM. Have this example. Not example, इसको भी छोड़ देते हैं. हाँ, इस पे आता है cost of equity. Cost of equity capital. Now look at this slide, which is on your screen. What I have done, I have calculated the cost of equity capital of some companies in India based on our learning. Now, Reliance Industries, risk-free rate is 7.15. Yesterday we saw it was 7.16, isn't it? जो risk-free rate है, government का rate है, that is 7.16. So I have taken it 7.15. Now, market risk premium I have taken 8.5. I could have taken 8.33, okay, but I have taken 8 point rounded off. We can take 8.33 also for better calculation. Beta is 0.9. Yesterday we calculated the beta of Reliance. Okay, suppose it was 0.9. So equity cost will be how much? 14.9. Applying the CAPM model, which is RF plus beta into MRP. Market risk premium आ गया नहीं? 8.5% is nothing but RM minus RF. ये already number दिया हुआ है आपको. Okay, fine. So equity cost is how much? 14.8. So here, risk-free rate, we know how to go. We can go to the government site and find out. MRP, we have relied on Damodran. Okay. Now, अगर आप ये देखो, एक सेकंड में एक चीज आपको बताना भूल गया था. Let's go back to Damodran site. Here, if you look at the site, अब ये दिया हुआ country risk premium. So he says that each country has its own risk. Okay. A country which has, a triple rating, risk is 0. Fine. Because, country which is having a triple rating, तो वहां तो इसका मतलब, if you borrow money from a company which is AAA, there is no risk of losing your money, isn't it? So there is no risk premium. जहां कंपनी वीक है, जिसकी रेटिंग ट्रिपल बी है या सिंगल बी है, तो इट विल बी रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम विल बी ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट. अगर गवर्नमेंट कैन बोरो एट 7.5% और 7.15%, रिलायंस कैन बोरो एट 8%. And DLF can borrow at 9%. So risk premium is going up as the company is becoming weaker and weaker in the financials as per the rating. So, DLF is single A,
and Reliance is AAA. So we'll talk about that also. We'll learn about that in abhi aane wali slides. So better the rating, the lower will be the risk premium. So it says that each country has its risk premium. Okay, fine. So let's look at India's risk premium. इसमें इंडिया का रिस्क प्रीमियम कितना है? कंट्री रिस्क प्रीमियम, हाँ हाँ, लेट मी कहा इंडिया इज 3.33. सो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? अगर इंडिया का रिस्क फ्री रेट 7.33 है मान लो, तो रिस्क फ्री रेट इंडिया का एडजस्टेड रेट होगा 4%. ये माइनस कर दो. गॉट मी? इतना रिस्क है इंडिया में पैसा लगाने का. 3.3 का रिस्क प्रीमियम इंडिया पे फॉरेनर्स के लिए. दे से दैट दिस रिस्की 3.3%. दे आर कंपेयरिंग अमेरिका. अमेरिका का देखो आप, इसमें रिस्क प्रीमियम जीरो होगा और वेरी लेस. ओके, वहां का जो गवर्नमेंट बॉन्ड रेट है 4% है. तो 4 में ऐड कर लो 3.3, तो इंडिया का बॉन्ड रेट आ जाएगा. समझ में आया आपको? कितना है अमेरिका का? जीरो. तो अमेरिका में अगर आप देखोगे, अभी जैसे इंडिया का देखा था 7.16 आ रहा था, तो अमेरिका का बॉन्ड रेट देखोगे आप, अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, तो 4% है. उसके अंदर इंडिया का रिस्क फ्री ऐड कर लो, क्योंकि वो तो रिस्क फ्री है. तो रिस्क फ्री रेट इन द वर्ल्ड इज 4%. अगर सबसे ज्यादा लीस्ट रिस्की कंपनी है, कंट्री है, वो अमेरिका है. सबसे सेफेस्ट, वो आपको 4% दे रही है. और इंडिया में 3.3% रिस्क है. तो दोनों ऐड कर दो, तो वो जो ऐड करोगे तो इंडिया का बॉन्ड रेट आ जाएगा 4 + 3.3, वी गेट 7.33. तो वो रिस्क, जो रिस्क प्रीमियम है, वो कहता है कि हमारे लिए इंडिया इज रिस्की. गॉट इट? वो मतलब वो 4 के से ही वो है, 4 के बाद ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, उसका बॉन्ड रेट आ जाएगा. ओके. हाँ हाँ, जिसका एक ही है, मतलब सब जिसका, हाँ हाँ, वो सबके सब एक ही, सबका एक ही है. नो वेरियंस, नो वेरियंस. सो विल टॉक अबाउट दैट. अभी इसको थोड़ा पाक करो, टी टाइम में बात करेंगे. तो अभी यहां जाते हैं. तो ये समझ आ गया आपको? ये आ गया हमारा इक्विटी कॉस्ट. हैव यू गॉट दिस? अगर किसी भी कंपनी की हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो दिस इज अ मैकेनिज्म. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फुल प्रूफ, बट एक चीज ध्यान रखें, दिस इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स. फाइन. दिस आई टोल्ड यू, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स. ओके, जस्ट लेट मी कंप्लीट. सो नाउ आपकी एक्सपेक्टेशन उसकी 17% हो, मेरी 16 हो, इसकी 15 हो, तो ये किसकी है? ये है लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द इंडिया. दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. all the institutional investors, they are going to dictate the terms of the market. हम लोगों को तो बेकार है, बिकॉज मैं सोचता हूं मुझे 18% रिटर्न मिलनी चाहिए. मेरा मेरा क्या मतलब, मैं तो अकेला हूं. लेकिन एक 95% जो शेयर होल्ड करता है, वो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है. सारे शेयर तो उन्हीं के पास है ना. अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स, ऑल द शेयर्स आर लाइंग विद इंस्टीट्यूशंस. सो उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज कैप्चर्ड हियर, मोटा मोटा. अब इसके बारे में पढ़ सकते हो आप, आपके आगे खुलेंगी. तो दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, expected return in the eyes of the marginal investors. And who is the marginal investor? The biggest investors of India. They are mutual fund and other people, okay, who are holding big stocks of the company, because they are going to rule. We are not going to rule. हम तो सस्ते महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में बेच के निकल जाएंगे मार्केट में. We are going to make losses, but those people are going to run the market, and they are going to dictate the market. So अब ये देखो, आप अगर आप पैसा लगाते हो किसी भी कंपनी में, आप कहते हो मुझे 15% मिलना चाहिए, मिल रहा है ना रिलायंस में, तो आप सेटिस्फाई हो, आपको 15 देगा, तो इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी है. थिंक फ्रॉम द एंगल दैट नॉट एज दिस थिंग. ऑल रैशनल बिग इन्वेस्टर्स, व्हाट दे थिंक? दे थिंक दैट वी शुड गेट 15% रिटर्न फ्रॉम रिलायंस. अच्छा, अब हम देखें दूसरी कंपनी कौन सी है, अदानी. अदानी में दे आर एक्सपेक्टिंग 18.5, बिकॉज कंपनी इज रिस्की है. कंपनी इज रिस्की, so they are going to invest only if they get higher return. Okay, otherwise they are not going to touch Adani. Then look at, for example, Sun Pharma. Sun Pharma is into pharma business.
उसका बीटा कम है। अब बिजनेस श्योर शॉर्ट चलेगा। देखो रिलायंस का बिजनेस तो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर।